नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का पेपर किस प्रकार का होता है। तो ये मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी का एक पेपर है और सब्जेक्ट है जूलॉजी का। तो आइए देखते हैं इसमें आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहता है। बाकी जो आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसके अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी आप अगर चेक करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको भी आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो सब्जेक्ट है जूलॉजी का और कुछ मैं पढ़ता हूँ ताकि जल्दी हो पाए, बाकी आप देख सकते हैं। मेडुसा ऑफ ओबिलिया इज आंसर इज यूनिसेक्सुअल एंड द नेक्स्ट इज डिजीज कॉल्ड टारा इज कॉज्ड बाय आंसर इज दैट एंड नंबर ऑफ टेस्टिस एंड हिरोडेनेरिया इज़ प्रेजेंट इन 11 पेयर्स। तो इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। लिम्प्रे बिलोंग्स टू क्लास है ना साइक्लोस्टोमेटा। सेगमेंटेशन वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन द एनालिड्स। जो भी आपका उत्तर अगर आपके हिसाब से कुछ है तो आप उस पर चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ए मीजोडर्मल इंडोस्केलेटन अमोंग इनवर्टिब्रेट्स इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10th है, 11th है। जो आंसर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आपके हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in answer you can correct according to your knowledge and according to your information. Which of the following environmentalist first gave the concept of biodiversity hotspots? नॉर्मन मेयर्स। ठीक है। द लॉ विच इंश्योर environmental stability and maintenance of ecological balance is Wildlife Protection Act 1991. So such type of questions are there. All the above, जिसमें भी ज़्यादातर में all the above है, यानी अगर आप देखें ऐसा ऑप्शंस जिसमें बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें भी all the above है तो उसको ही आप टिक करें। यदि आपको बाकी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, उसमें आपको नहीं बनता, अगर बन रहा है जो भी आंसर आपको सही मिल गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसमें आपको आंसर नहीं पता है और लास्ट में ऑल द अबव है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको सही लग रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। एलोनटॉइज इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ठीक है। What part of the cell forms a nuclear envelope during telophase? Endoplasmic reticulum. 30th question है, Golgi apparatus is absent in, that is blue green algae. Right answer is blue green algae. Ribosomes are attached to ER through riboforins. ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी से और 50 क्वेश्चन जूलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। न्यूक्लियोसोम कंटेन ए कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है। इन हायर एनिमल्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज यूनिपेरेंटल। Mitochondrial genes are inherited in non-Mendelian mechanism. बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आंसर में ठीक है और आपके हिसाब से अगर कोई आंसर और सही हो रहा है, अगर इसमें गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से।
Diagrammatic representation of a chromosome is known as idiotype. The absence of Y chromosomes in human causes Turner syndrome. In genetic test 9 ratio 7 ratio is F2 generation present. Ephistasis. The most important gene located on Y chromosome that is involved in sex determination in human is SRY gene. Satellite DNA consists of short repetitive nucleotide sequences. Plasmid vector of cloning grow within bacteria and present in bacterial colonies on agar plate. The codon that determines as protein biosynthesis, all of them. The promoter sequence is eukaryote is in eukaryote the start codon also specify the amino acid methionine. Which of the following feature is correct about microRNA is they are not coding but functional. Synthesis of peptide bond is catalyzed by 23S RNA. Cell signaling can be classified into which immunoglobulin is the principal one found in a secretion such as milk, IgA, which antibody characterize the allergic reaction, IgE. The ability of immune system to recognize self antigens versus one self antigen is an example of is tolerance. Which of the following substance will not stimulate an immune response unless they are bounded to a larger molecule that is heptane or heptene? Which of the following is not related to poor MSC linked immune response? That's a defective V gene rearrangement. V gene rearrangement. The virus that can achieve neoplastic transformation are called DNA tumor viruses. The last electron acceptor in ETS is O2. The metabolic pathway associated with NADPH production is known as pentose shunt. The secondary structure of protein is stabilized by hydrogen bond. Antihemophagic vitamin is vitamin K. The secretion of testosterone is maintained by Leydig cells. Leydig cells. Which of the following is essential for blood clotting? Blood platelets. The volume of air breathed in and out during normal breathing is tidal volume. What is the purpose of doing research? Both A and B means to identify problem to find the solution.
रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज ऑल ऑफ द above and is preferred sampling method for the population over the phenotype size. ANOVA technique is used in multiple samples. Non-directional hypothesis that is tested for its rejection is null. Which of the following one do not include in measures of central tendency? Arithmetic mean is the most widely used measure of dispersion, that is variance. The BLAST database, BLAST N, is used in search for nucleotide sequences. जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं और उससे रिलेटेड आंसर भी है, जो है सही है। Correlation coefficient tends to lie between -1 to +1. Variance is square of SD. Which of the following is the characteristics of computer? There's a diligence, versatility, and reliability. All of the above. All of the above is the right answer. The fastest and most expensive computers are supercomputers. Computers related questions. For general computation, computers were based on microprocessors. The first computer language developed was Fortran. Which memory stored large amount of data and the data cannot be processed directly by the CPU? Secondary or auxiliary memory. Which of the following is an example of an operating system? That is Unix, Linux, Windows XP, all the above. Normal curve is बेल शेप्ड। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए, तो आपने देख लिया, तो उसमें तैयारी कर सकते हैं जस्ट एक आइडिया के लिए, और कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके भी एग्ज़ाम में। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।